फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, नहीं हो पाएगा। हाय गाइस, दिस इज़ शोरूमिता, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ पेंटिंग कृष्ण विद वाटर कलर का पार्ट 2 लेके। सो यहाँ पे आई एम पेंटिंग श्री कृष्ण विद माई वाटर कलर। Oops, I'm getting the same line twice. तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि मैं क्या कलर यूज़ कर रही हूँ। ओह, इट्स अ ब्लू कलर एंड इट्स कोबल्ट ब्लू ह्यू एंड आई हैव ट्राइड 2-3 attempts to show the color in an aesthetic way which I Failed deliberately. सो apologies। अब मैं पेंट कर रही हूँ श्री कृष्ण का फेस। तो यहाँ पे पहले बेस लेयर के लिए आई हैव यूज्ड कोबल्ट ब्लू ह्यू एंड उसके ऊपर आई हैव लेयर्ड वन पार्ट ऑफ द फेस using Naples yellow, and then I am shading more and more layers of the face using the same cobalt blue hue only. So keep watching how I'm building up the shadows and the lighter parts. Yeah, successfully have shown burnt sienna. Well, for making more shadows, for enhancing the darker parts and building up the depth in the face, I have mixed burnt sienna with cobalt blue to paint the shadows on the face of Krishna. एंड अब चीक्स पे मैं वर्मिलियन ह्यू पेंट करूँगी एंड धीरे धीरे पूरे फेस पे लाइट एंड शेडो का इफेक्ट मैं पेंट करते जाऊँगी एंड इन बिटवीन आई कीप द पेंट टू ड्राई अप एंड उसके बाद ही मैं दूसरा लेयर चढ़ाऊँगी। I am painting the highlight portions of the face एंड जो कि बहुत लाइट है, तो मैंने ऑलरेडी बहुत पेंट कर दिया है, तो इसलिए मैं अब वाइट से वो ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ऑल्सो आई एम पेंटिंग द अदर पोर्शंस यूजिंग द ब्लू कलर जो कि मेरा बेस कलर है, वो मैं दे के एंड यूजिंग द वाइट ऑल्सो आई एम ब्लेंडिंग द shadows and the highlight portions among themselves and मैं जो मीडियम टोन्स है उसके लिए इन दोनों को ब्लेंड कर रही हूँ। एंड द वाइट कलर विच आई एम यूजिंग इज़ ए पोस्टर कलर बिकॉज ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी का होता है एंड इट गिव्स एन इंटेंस ब्राइट इफेक्ट द फेस। सो इसलिए मैं एक पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ। Now I'll be painting the shadows between the eyelid and the eyebrows जो कि बहुत डेप्थ पोर्शन होता है। So उसके लिए मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। Also I'll be painting the base layer of the eyes, like for the eyeballs and everything of the eye I'll be using brown only and धीरे धीरे मैं उसके साथ blue mix करते जाऊँगी and then for the darker regions I'll be using black. Guys, you can see that I have pasted the reference image on the left corner of this video and I'll also attach the link of this reference image in the description. You can go check out the image and आप खुद से भी ये ड्राइंग कर सकते हो। एंड आउटलाइन के लिए यू कैन चेक आउट द आउटलाइन वीडियो लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है मेरे चैनल पे एंड यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ हाउ आई एम ड्राइंग द आउटलाइन एंड आई हैव ड्रॉन द आउटलाइन विदाउट any grid method. I have drawn with the basic idea of proportions of drawing face, body, everything. So do check out that video for more reference. So in this part I am painting the face only and also the crown of Krishna and the Mayur Pank and मैं कृष्ण का फेस के लिए I am putting white as a highlight and I'm gradually adding other colors also for the shadows and the medium tones and also I'm painting the lips
using vermilion hue. Guys, if you're watching this video on YouTube, then please do subscribe my channel, and if you're watching this on Facebook, then make sure you like my Facebook page. Also, अगर वीडियो अच्छा लगे तो like and share करना मत भूलना. And don't forget to check out my Instagram account. Now I'll move on to painting the crown and the mayurpank, and for the base layer I am using lemon yellow. बेस लेयर होने के बाद थोड़ा शेडिंग के लिए आई विल बी यूजिंग वर्मिलियन ह्यू एंड उसको मैं स्प्रेड कर दूंगी. एंड ऑल्सो आई विल पेंट द बेस ऑफ मयूरपंख यूजिंग लेमन येलो एंड उसको वर्मिलियन ह्यू से थोड़ा शेडो दे दूंगी. एंड फॉर मोर डिटेल्स ऑन द मयूरपंख आई विल बी यूजिंग कोबाल्ट ब्लू for one portion for showing the blue kind of thing, and for the other part for showing the illuminance of the light I'll be using vermilion hue for the leafy details of the mayurpank. And for adding more details of shadows I'll mix brown with these colors and I'll add depth to the shadows. Also, in between the more detailed part I'll be using cobalt blue to paint the darker regions of the mayurpank. And last में I'll add one more layer of lemon yellow for smooth blending. Now I'll paint the details of the crown using vermilion hue and sap green. उसके बाद for showing the difference of the lighter and the darker portions मैं vermilion hue के साथ थोड़ा brown mix कर दूंगी. Then I'll intensify the details of the crown. And also for more detailed structure of the mayurpank I have used the white again on the leafy detailed structure of mayurpank. So gradually I'll paint all the details of the crown using brown, which is burnt sienna. And आप देखते जाओ मैं कैसे पेंट कर रही हूँ full process, and then you can try on your own also. For highlights I am using white on the crown, and also for the U-shaped structure on the forehead of Krishna I am using the same white color. And with this I am concluding my today's video, and guys stay tuned for the next part.